EN5, USA, China, Russia, SHIPSTAR again. Will bomb Earth maybe 07, year 2022 to year 2028, distance from Earth, dead, 80,100,000, 100 million, 50,100,000, 100 million, city Mars and city Jupiter, planet 2023 to 2025. 2026 9,999. Please you needs in Mars. Planet we take a Earth finished now hours centered approach we support. Death rip dead Earth 2025. YEES in Martian hours home houses planet sea level planet county. 코스믹 스페이스 X 슈퍼헤비 스타쉽 SN15 또는 SN20 BM2 BM5 미국, 중국, 러시아 SHIPSTAR 아마도 지구에 폭탄을 던질 것입니다. 2022년 7년에서 2028년 2년 지구 죽은 사람으로부터의 거리 8,010만 100만 5,010만 100만 도시, 화성과 도시, 목성 플래닛 2023에 2015 9,999분의 2026 화성에서 당신이 필요합니다. 우리는 지구를 가져갑니다. 이제 우리의 중심 접근 방식을 지원합니다. 죽음의 땅 2025 해수면 플래닛 카운티. As humans, we are biased to think linearly. As entrepreneurs and innovators, we need to think exponentially. If you can build a machine to do what people do and do it faster and better and more reliably than humans, then why not? Martin Ford. For me, the game changers in 2025 are self-driving cars, virtual reality, bioprinting human organs, human gene editing, AI personalities, 3D printing in space, billions connected to the internet. These are precisely what we are going to discuss today. Before we jump right into the video, welcome to Exodus. We upload the most incredible videos, giving you a trip through space, time, and chance. We ask the biggest and craziest questions only science can answer. If it's your first time here, be sure to subscribe and turn on the bell notification so you get notified the next time we upload. Without further ado, let's get straight into the video. We're using AI every single day, and this will transform our businesses, gives machines the ability to learn by themselves and make more autonomous decisions. The Internet of Things, or IoT, means that we now have more interconnected and smart devices. They started with our phones. Now we have smart watches, we have smart TVs, and soon, smart everything. Today, we have 20 billion. Soon, we have 200 billion interconnected devices, and they surely will transform our world. Big data. We now have a world full of data, more than ever before. What we now also have is intelligent algorithms that can extract insights automatically. So we get augmented inside that. We'll give companies unprecedented insights from their data. Blockchains. They are super secure ways of storing our information and validating transactions. We're not talking about distributed ledgers as well. This will transform how banks operate and how we keep our possessions. Cloud and edge computing. Cloud computing means we can now process and store data via the internet on other people in other people's data centers. The extended reality, what we are now seeing, is that our real world is being extended into the digital world with augmented reality. We place objects onto the real world, or even virtual reality, where we are entirely immersing ourselves in the digital world. The future will mix those realities much more intensely. Digital twins. They are basically virtual copies of products, or even entire processes, and ecosystems that will allow us to tweak them and experiment with them.
without actually having to do this to the real object. Robots and cobots. What we are now seeing is increasingly autonomous robots that are aware of their surroundings. So they become intelligent co-workers of us. They are aware of us, we are aware of them, and we can work together with them. Autonomous vehicles. We are now seeing self-driving cars, self-driving delivery robots, and we will see a lot more of those in the next 5 years. 5G is basically the 5th generation of mobile communication that will give us speeds and latencies of internet communications on our phones that is as good as our fiber optic lines, genomics and gene editing. Basically, it's the ability to understand our genomic structure, how we are made up as humans, and what we're made of, above, and the ability to edit ourselves to cancel out things like cancer, and potentially create ultimately new beings that have never existed before. Machine core creativity and augmented design. This basically means that we can now use tools like artificial intelligence, enables design software that can be creative, come up with new ideas, new concepts. We are now seeing creative AI is being able to come up with new music, modern dance routines. And this is going to transform the creative processes in our organizations. Digital platforms. Platform businesses like Facebook, Airbnb, Uber, and others have been extremely successful, and they're transforming how we interact with the world. They're bringing us the gig economy, and they will bring us more transformations in the future. Drones. These autonomous flying objects will not only transport our passwords to us and will be part of the logistics supply chain, but they will also transport passengers. So the future will be to replace autonomous cars with self-flying drones. Cybersecurity. We're now facing digital threats not just by people, but using the latest technology like AI to automate attacks, and companies need to use the latest technology to ward those attacks off. Mass personalization. What we're now seeing is that companies are becoming more intelligent, understanding more about us, and can serve as products and services in the exact moment when we need them. 3D printing is transforming the way we manufacture. In the past, we had to take things off, and now we're adding things. We're using innovative materials to build new things, layer by layer, from trainers to entire houses. Nanotechnology and material science. This is transforming our understanding of materials on a micro level, and will give us completely new products, things like bendable screens and extendable battery lives. By 2025, your relationship with your search engine will be like that of a human assistant, who can understand complicated ideas, but who has read billions of pages. So this was just a quick overview of the biggest technology trends that are going to transform the world in the next 5 years. So expect the unexpected and prepare for exponential change. And with that being said, we have come to the end of the video. If you enjoyed it, be sure to hit the subscribe button for more awesome videos just like this one. Thanks for watching. Sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Arthur C. Clarke. Shouldn't we be content to be cosmic sloths, enjoying the universe from the comfort of Earth? The answer is no. Stephen Hawking. To look to the future, we must first look back on the past. That is where the seeds of the future were planted. I never think of the future. It comes soon enough. Albert Einstein. Elon Musk sends the first SpaceX Starship to Mars, preparing the way for the first human explorers of the Red Planet.
double as energy storage cells and are capable of data storage and retrieval. Robotic dogs are employed by fire and rescue services, police, military, and delivery companies. The first humans leave Earth for the Red Planet aboard a SpaceX Starship. The Mars astronauts use VR goggles to help keep them calm during the 7-month journey. Humans begin to interact with virtual reality artificial life. Living beings in a digital world that learn how to act, move, and interact with humans on their own, creating their own behaviors and way of life. Wearable tech is replaced by subdermal tech, chips that are inserted beneath the skin and link users to their home and robotic devices, giving them control using verbal instructions. People with medical issues are using Neuralink chips to make them better. The chip is able to restore eyesight and help people who are paralyzed to walk again. The Universal Translator is used at the United Nations, reducing the need for human interpreters and translators. Quantum computers are used in high-end chemical engineering. They are able to quickly design new medicines, biodegradable plastics, and building materials. 5G networks carrying vast amounts of data take control of transportation flow systems and self-driving networks to improve urban flow. The interplanetary internet system goes online, creating a computer network in space. The network is made up of landing robots, planet satellites, and Earth ground stations. A Jupiter rover sends data to a Jupiter satellite, which beams it to a Mars satellite that then sends the data to Earth. Facilities in place on Mars begin production of 3D printed habitats. Other robot factories produce water and oxygen, as well as laboratory-grown plant and meat products for the arrival of more human explorers and scientists. The first guests arrive at the former International Space Station that has been converted into a luxury orbital hotel, while a new commercial International Space Station is being used for scientific research. The rise of bioplastics takes place, created from renewable resources such as sugar and mushrooms. Reprogrammable microchips allow hardware to be upgraded just like software. Filming begins on the first Hollywood blockbuster that is filmed entirely off-world, using sets and locations in Earth's orbit and on the Moon. SpaceX's Starlink internet constellation for Earth is fully operational. The world's first industrial-scale fusion reactor goes online and starts generating electricity from the fusion of hydrogen atoms, creating vast amounts of clean energy. People start taking anti-aging drugs that take away certain cells that develop as humans age. Elon Musk begins implanting Neuralink chips in healthy people to give them enhanced abilities. The first artificial intelligence judge sentences a criminal to jail. People are now working in completely virtual workspaces. Digital fabrics evolve into power assist fabrics, helping humans walk and gain back mobility in old age. They also give humans added strength and show users how to learn new physical skills. Smart tattoos are used with embedded personalized circuits that allow people to control the devices around them. 4D printing is being used to create new smart materials that are able to transform their structures in response to their environment, such as when exposed to heat or light. People are now living with 3D bioprinted artificial organs. Swarm robotics start to make their way into everyday life. Fleets of robots, such as small drones or robotic ants, communicate with each other and work together. They are able to lift construction materials and become structures themselves by organizing to form a bridge. Everyday people are living with IA,
brain chips for intelligence amplification, allowing their thinking, memories, and problem solving to be helped with the use of a machine. Subdermal tech is overtaken by neural links. I am not a human verification systems are in place to keep humans out. Permanent lunar settlements. Humans are living on the moon in science research stations and transit hub facilities, acting as a link between Earth and Mars and the outer solar system. A space station constructed in orbit around the moon begins operations. Billions of people around the world tune in to watch the Bionic Olympics, where humans with robotic limbs compete. People are wearing self-cleaning fabrics that are woven with micrometals which break down dirt when exposed to sunlight. The Starshot Alpha Centauri program, founded by Yuri Milner, Stephen Hawking, and Mark Zuckerberg, launches 1,000 tiny spacecrafts that are equipped with light sails and are powered by lasers on Earth get sent into space. They reach 20% of the speed of light. The tiny spacecrafts are on a mission to fly by and gather data from Proxima Centauri b, an exoplanet that is in a human-habitable zone of the star system. The Square Kilometre Array goes online. Dishes across the deserts of South Africa and Australia are 50 times more sensitive than the Hubble Space Telescope and are able to pick up faint radio signals from any potential extraterrestrial civilization. 4D printing of moon habitats began. Materials absorb solar radiation and micrometeor impacts, converting solar and impact energy into electrical energy. Moon-based construction of spacecrafts began, to be used in the further exploration of the solar system. Quantum computing-based chemical engineering creates a genetically altered strain of wheat designed to survive in the extreme cold and thin CO2 atmosphere of the Martian environment. And neural brain chips allow people to talk to each other telepathically. Humans record every event of their lives, from birth to death. Inner speech recording is possible. Hackers are able to plant artificial memories. Humans have sensors flowing through their bloodstream, monitoring their health. In robotics, police robot units accompany human police officers for patrols. The robot population surpasses the human population. Extinct animals are brought back to life. The first woolly mammoth is grown from DNA found in the preserved soft tissues of the long-dead beasts. Herds of mammoths and woolly rhinoceroses roam in a zoo of living fossils. Asteroid capture operations began. Robots guided by artificial intelligence capture asteroids from the asteroid belt and maneuver them into the orbits of the Moon and Mars. The raw materials are delivered to Mars and the Moon to be converted into materials for further off-world habitat construction and space exploration crafts. Stem cells regenerate missing body parts, including teeth and limbs. Genetic engineering adapts human bodies for the rigors of spaceflight, reducing muscle and bone mass loss from prolonged periods of weightlessness. 300,000 people live on Mars. Newborns on Earth inherit the data trails of their parents. Arc reactors are now efficient and compact. They are used as a portable power source and are employed for military and exploration purposes. People are able to rent and stream dreams while they sleep and dream together in the same virtual world. Artificial general intelligence emerges from a super quantum computer. A human-designed computer achieves consciousness. It is able to learn new things and is self-aware. Interspecies communication is now possible. Robots begin to hold funerals for one another. Artificial life forms are born. Quantum computers are able to design biological life forms from scratch.
from redesigning bacteria that can consume plastics to creating designer humans. The average lifespan of someone born today will be 5,000 years. An AI has the status of a corporation. A global artificial intelligence manages a global Hyperloop transit system, removing the need for commercial flights. All Hyperloop vehicles are built with self-repairing smart materials. Basic molecular assemblers are in use, letting humans create any type of food with the push of a button. Humanity is well settled all around the solar system and is exploring the outer system. Robotic transit fleets transport materials across the solar system. NASA's Alcubierre warp drive goes live. In the vacuum of space, nothing can move faster than the speed of light, but negative energy is used to warp space-time. The space behind the spaceship expands, and the space in front contracts, causing a warp bubble, bending space-time around the spaceship and breaking the speed of light. Mars declares independence from Earth. Humanity is declared a Type 1 civilization. They know how and need to use and store all of the available energy on the planet. The Type 1 civilization controls the weather, the sea currents, the volcanoes, the earthquakes, and has terraforming technologies. Dyson structures are built in orbit to capture the energy from the sun. Generation ships built from super lightweight and self-repairing materials are accelerated to sublight speeds. Journeys to nearby star systems take place. Colonization of worlds around distant stars begins. Orbital cycles of Earth create a new glacial ice age. Environmental engineering is employed to warm the planet and reduce glacier growth. Humans develop new colonies at new star systems and immediately begin asteroid mining and the construction of the Dyson structures to capture energy. Dyson structures now surround the sun and distant stars. Humanity to achieve Type 2 status, the beginnings of the galactic civilization. As a Type 2 civilization, they are able to use and control the energy of its planetary system and can prevent the death of its own star by injecting fuel into it. Humankind's consciousness is downloaded into a quantum computer core. The Matryoshka brain, a supercomputer using multiple Dyson spheres, drives a simulation for humanity. Humanity is transferred into a simulation to live and travel much further in the galaxy. Swarms of tiny, lightweight robots enter distant star systems and begin construction of various facilities before the arrival of humanity. Human consciousness is transmitted as data to the new star system where robot bodies are waiting to accept the human consciousness. Robotic bodies are exchanged for biological ones, designed and grown to be suitable for local planetary environments. Humanity is on course to become a Type 3 galactic scale civilization, needing to use all of the energy available in its galaxy, with technology so advanced that space-time is their playground. At this point, humanity needs another civilization of pure numerical spirits that have been waiting in a colder space outside of the universe. Starships land on Mars.
marking the beginnings of the Mars colony. All of the Martian rovers sent by different countries before this day watch as the 5 uncrewed starships land and deliver life support systems. These pioneering starships pave the way for humans to land on Mars in 2 years' time, for fishes to be grown in 9 years, and for the first baby to be born on the red planet in 15 years' time. The 5 starships land at Erebus Montis. The cargo ships are delivering essential life support systems. These are made up of solar panels, backup fuel, oxygen, water, dried food, waste management systems, spacesuits, medical supplies, and the first habitation pods. There are also tools and equipment for experiments. One of the starships is carrying Mars's new Starlink communications network and deploys it in orbit before landing to deliver life support cargo. Only 4 satellites are needed to create the Martian Starlink, as the Mars base will be concentrated to one area. There are also 7 football fields worth of solar panels on the cargo list. These are used to power the future base and fuel production. Solar panels on Mars are only 43% as efficient as they are on Earth. Rovers, as well as robotic dogs by Boston Dynamics, which SpaceX uses to inspect rockets on Earth, are deployed from the starships to the Martian surface. Work begins on setting up the Mars base. The rovers and robots deploy the solar arrays. Prep work begins for fuel production experiments. Rovers begin drilling for icy water deposits. The Sabatier process is used to take the CO2 from the Martian atmosphere and hydrogen from mining Martian icy water, and then uses heat and pressure to turn it into water, oxygen, and methane fuel. Multi-use rovers begin flattening and melting the Martian regolith, the loose soil, to prepare a large flat landing pad. It reduces the kick-up of dirt and rocks, increasing the safety for the next landings. The population on Mars is made up entirely of robots. 2 years and 2 months have passed since the first landings of the 5 cargo starships, and the new launch window opens as Earth and Mars are close together again. Two starships carrying a total of 30 astronauts land on Mars. 10 additional cargo ships accompany them, carrying an oversupply of life support. These first astronaut settlers are scientists, engineers, medical specialists, and military personnel with scientific backgrounds. They all have to stay on Mars for the full 2 years and 2 months. This is not a short-term visit. It is a mission to make life sustainable and multi-planetary. During the first week on Mars, the astronauts are suffering from the effects of low gravity after the 7-month journey and have weaker muscles. The first week is used to acclimate to the gravity of the red planet and celebrate surviving the journey. The new settlers live in their starships that they landed in. The crew begins to adapt to their new surroundings. Life on Mars is harsh. The average temperature outside is minus 63 degrees Celsius or minus 81 degrees Fahrenheit, with a maximum of 20 degrees Celsius, 68 degrees Fahrenheit in the summer at the equator. Windstorms are common on Mars. They lift rust-colored dust into the atmosphere that can cover the entire planet. Mars also experiences quakes. Orbiters that are monitoring the climate on Mars act as weather satellites, warning astronauts of incoming dust storms and changes in the weather. The 2-year-long work schedule begins. Days on the red planet are a little over 24 hours. The workday of unpacking and carrying heavy objects is made easier as the gravity on Mars is only 38% of that on Earth. Once the life support systems have been unpacked and deployed, the next priority is testing and starting production of cryomethane fuel. The fuel is needed for the return trip to Earth. A small crew of astronauts begin conducting experiments that test turning the Martian soil into a 3D printing material. The Green Project also gets underway to start growing plants indoors. Settlers begin cultivating the Martian soil. NASA has packed designer plants that have been genetically engineered to grow on Mars, and testing begins on the cyanobacteria that was transported from Earth. This organism is used to produce ammonia fertilizer from the nitrogen in the Martian atmosphere. Crops such as rye, radishes, tomatoes, beans, carrots, and potatoes are grown, and the astronauts' waste is recycled as fertilizer for the plants.
Soon, the Mars base will have a delivery of fishes. On Earth, SpaceX now has factories that are producing 2 starships per week, each one costing $5 million to build. 104 starships are built per year, and 216 starships are ready for each launch window. Earth and Mars orbit around the Sun at different speeds, so there is only a launch window every 2 years and 2 months when Earth and Mars are at their closest. During each launch window year, there are only a few days, as low as 12, to launch, and for each day, the launch window ranges from only 30 minutes to 2 hours. So a combination of cargo and crewed starships are built, waiting ready to be launched when the window opens. Back on Mars, one starship launches heading back to Earth, carrying on board the entire 30-person crew who have lived on the red planet for over 2 years. Landing of the second group of settlers, humans now surpass robots as the majority population. The first architect arrives, along with 4 privately paying individuals who are paying $50 million each. The rest of the crew are scientists, engineers, and botanist farmers. The first set of small permanent greenhouse domes are constructed, adding to the number of plants being grown on Mars. The settlers eat the first Martian salad. A small portion of the food on the planet now comes from locally grown produce. This slowly reduces the amount of food that needs to be transported from Earth on future missions. SpaceX begins construction of the Depot X, the first permanent dedicated fueling station on Mars. And work begins on the first 3D printed habitat. The AI Space Factory 3D printer uses a mixture of Martian soil and lab-grown plants which act as the glue, the polymer, that holds the material together. The 3D printed outer shell of the new habitat provides protection from radiation, while an inflatable inner shell is added for extra safety. Parts are deconstructed from one of the starships to create the communications and life support systems for the new 3D printed habitat. As more sophisticated 3D printing robots arrive, larger hydroponic crop facilities are built, generating the majority of the food for the Martian settlers. Kimball Musk even has a team working on Mars with their own vertical farm. The settlers begin testing underground digging for habitat purposes. Data is sent back to the Boring Company on Earth. Space agencies from all around the world are now sending their own equipment and scientists to Mars Base Alpha. The domain name Amazon.Mars is registered by Jeff Bezos. Blue Origin plans to open for delivery to Mars for space agencies first and then later for private clients. The new Starship crew have transported fishes from Earth to create an aquaponic greenhouse, as there is now enough water being made on Mars. The first funeral is held, the settler is cremated and spread across the Martian landscape. Back at Earth, a fleet of starships full of fuel, cargo, and passengers is waiting in low Earth orbit. When the launch window opens, they fly as a fleet to Mars. The spacecrafts are able to support and dock with each other if needed during the 7-month journey. The year 2035. This year will be known as the Great Crossing. Earth and Mars are closer than usual. This is known as a perihelic opposition. The journey is shortened from 7 months to 5. Hundreds of settlers now land on the red planet. Autonomous industrial-scale 3D printers are now used to grow the base. The international habitat expands and becomes a town-sized settlement of interconnected domes. The construction of the first Martian hospital begins, and a growing number of people decide to remain on Mars as more facilities are built. The
first people with the intention of becoming permanent residents arrive on Mars. The colony crosses the 1,000-person mark. There is even a small-scale TV show that is made on the Red Planet. The first Martian marriage is watched across Earth and Mars, while exploration missions discover cave systems suitable for the development of protected underground habitats. The Boring Company tunnel digger lands on Mars and begins testing digging underground tunnels for shielded passageways and for underground habitat construction. This marks the beginning of Elon Musk's Boring Mars Company. Robotic bases are now present at different locations further away from the main base. They act as mining outposts, and nation-states begin constructing smaller habitats away from the base. They become embassies on Mars, and architectural design moves habitats from purely functional constructions to expressive symbols of national pride. The first person is born on Mars. Scientists study the health of the mother and baby closely. A large number of the new arrivals are now commercially paying 2-year stay customers. All travelers are still required to contribute in growing the Mars society. With over 7,000 people now on Mars, the first Martian political system is created. Local policies are needed to help govern the residents of Mars and keep pushing the mission of being self-sustaining as a matter of survival for the colony. The first restaurant opens on Mars, serving bioprinted food, including meat. The first bioprinter arrives. It is used at the hospital to test the printing of human parts. A dedicated maternity ward is opened at the hospital to deal with the increase of births from the Martian residents. The first parts of a nuclear fusion power plant begins construction, reducing the need for additional solar panels that are sent with each mission from Earth. 2046, the year of the Martian explorers. The first person climbs Olympus Mons. It is 2.5 times taller than Mount Everest, making it the tallest mountain and volcano in the solar system. The 9.5-month journey tests the limits of the new flexible spacesuits. The first mRNA manufacturing facility is operational, allowing the people of Mars to be vaccinated for when they return to Earth. Schools are now being built as workers begin to move their families to Mars. Blue Origin's first fully autonomous orbiting manufacturing station arrives in Mars's orbit. The space station processes asteroids for rare materials. It is done in space so that the Mars atmosphere is not polluted. Manufactured goods are then sent down to the Martian surface. Elon Musk opens the first Tesla Gigafactory on Mars. Here they recycle solar panel batteries and assemble open and enclosed electric transporters, and also maintain ATVs and other SpaceX transport vehicles. The year 2051 is known as the Second Great Crossing. The close orbits of Earth and Mars allows for another mass movement of people and equipment. Tens of thousands of people land on the Red Planet. Government officials from different Earth nations make the crossing. Mining companies send management teams and exploration geologists to the planet and establish small company habitats. AI robotics and a productive human workforce now makes Mars fully self-sufficient for all essential goods. The colony produces all of its own power, breathable air, water, food, and fuel. If resupply missions from Earth were to stop, the Mars colony would survive and grow, but in a primitive way, as there is still a need for advanced electronics from Earth to keep the colony developing as an advanced civilization.
To mark the 10,000 days humans have settled on Mars, the first Mars-born human visits Earth. The traveler is assisted by a robotic suit controlled by a Neuralink brain chip that helps support them in the heavy Earth gravity. On Mars, grasslands and woody plants are thriving in vast enclosed greenhouse domes built over melted ice lakes near the equator. They are slowly adding oxygen to the Martian atmosphere. The first strands of grass are found growing wild on the Martian surface. Escaped seedlings from the greenhouses are attempting to survive on the surface of Mars. What humans will look like in 1,000 years. Humans are still evolving, so where will evolution take us in 1,000 years? Chances are we'll be taller. Humans have already seen a boom in height over the last 130 years. In 1880, the average American male was 5'7". Today, he's 5'10". We may also merge with machines that can enhance our hearing, eyesight, health, and much more. Right now, there are hearing aids that let you record sounds, generate white noise, and even come with a built-in phone. Another example is a team out of the University of Oregon, which is developing bionic eyes that help the blind to see. But it's not impossible to imagine that this technology could become a tool for seeing what we currently consider invisible, like different energies of light such as infrared and X-rays. There will eventually be a day when prosthetics are no longer just for the disabled. However, it's not just our outside appearance that will change. Our genes will also evolve on microscopic levels to aid our survival. For example, an Oxford-led study discovered a group of HIV-infected children in South Africa living healthy lives. It turns out they have a built-in defense against HIV that prevents the virus from advancing to AIDS. And with gene editing tools like CRISPR, we may eventually control our genes and DNA to the point where we make ourselves immune to disease and even reverse the effects of aging. Another way to jumpstart the human evolution on a different path is to move some of us to Mars. Mars receives 66% less sunlight than Earth, which can mean humans on Mars will evolve larger pupils that can absorb more light in order to see. And since Mars' gravitational pull is only 38% of Earth's, people born on Mars might actually be taller than anyone on Earth. In space, the fluid that separates our vertebrae expands, which led American aerospace engineer Robert Zubrin to suggest that Mars' low gravity could allow the human spine to elongate enough to add a few extra inches to our height. However, not even a move to Mars could spark the biggest change in human evolution that we may have coming in the next 1,000 years: immortality. The path to immortality will likely require humans to download their consciousness into a machine. Right now, scientists in Italy and China are performing head transplants on animals to determine if you can transfer consciousness from one body to another. They claim their next big step is to transplant human heads. Whatever happens in the next 1,000 years, whether we merge with machines or become them, one thing is certain: the human race is always changing, and the faster we change and branch out from Earth, the better chance we have of outrunning extinction. Yeah, they upgraded the rest of it. Current estimation is to enforce 8,600 vehicles. Begin a war procedure. They are estimating a larger amount. Compromises to platform. As always, I was zero. Anyone that's lost, on a
of Earth 1 was struck by debris and killed. He is dead. Oxygen level critical. Surprise! Antenna broke off and tore through my biomonitor in my suit, which kept me alive. Even though the crew must have thought I was no manned mission can reach me. And I'm gonna have design implode. And if by some miracle, yeah.
basically, you take hydrogen, you add oxygen, and boom, ready the catalyst. It'll separate into N2 and H2. History of humanity. Nothing bad has ever happened from that space thing. So, everyone that says up here with his flame, I'm sorry, I'm not taking time for everyone to go through your stuff. You should have left me I'm building myself up. I've been excellent to do calculations. Just as soon as my ears stop ringing. There's a caltech trying to make rocket fuel immediately burn down near the space program. Supply missions coming up, we should be focusing on the scapular curve, okay? The second we point the satellites at the hat, I broadcast pictures of my paperclip. If I put a dead astronaut on the front page of the Washington Post, they're covered in sand from all the weather activity we're going to do. Well, if you're waiting, okay, consider this. Now, we don't say that's the purpose of the mission, but we make it clear that that would be... Yes, sir. Yes, it's an emergency. You've got to be shitting me. Over to me. When? Back up. Look over to me. Right? No, not likely. Well, why don't we just ask Lewis? Let's get on Capcom and ask her to make trip home. Space travel is dangerous. They need to be alert and undistracted. But today, dear America, remember that astronaut we killed and... How are we going to handle the public? Legally, we have to... Right, he's going to starve to death long before we can help him. Give up on him. And what does that do to me psychologically? We're going to go out here. I have to listen. No, I'm not going to turn you, Peter. Mark, look! We're working on it. Is it not enough supply? 3,200 kilometers away, 32. Which means I have to get to the crater. But it has to be recharged at the hub. That's problematic, so I gotta live for 50 days inside a world. I'm gonna have to science the shit out of this. I have doubled my back. Going through half my battery, measured by the laws of thermodynamics. I would love to make it Good news, if I remember my training correctly, one of the lessons was titled Donors, which is why we buried it when we arrived. And planted that foot said everything's are fine out loud. Look, the point is, I'm not cold, and right now I got bigger problems on my hands. I've scoured every he's preparing for a journey. He's been conducting his delivery. We think that he plans to travel to the Ares 4-1 site to bring him home alive. Thank you very much. I try to say something proactive and positive. Really? Yes, sir. Mark drove 2 hours straight away.
there's a 17-minute gap. It's just authority over satellite trajectories and orbital adjustments make it happen. Nobody's smart enough to figure out that's his only chance. Bruce, what's your 6 months to build it in the first place? 3 months. So something like the overtime alone will be a nightmare. The overtime alone will be a nightmare. I'm the one that decides what's best for the crew. Bruce has 3 months to get the payload done. That's all that matters right now. It's up to the potatoes, so now it's time to reap and resow. The plant's alive. The smaller ones already seed. The larger one. And by the way, none of this matters at all if I can't figure out a way to make contact. Course for 13 days. He's nowhere near an obstacle. This hasn't dated up to this year. There's nothing out there except Peter. Okay, so where's the application? Listening for time for several. Yes. 32-minute round-trip communications time. Just put the camera. Roger that. 1, 2, so, here's the left. Somehow, from 1996, check the hour today. 26 turned. How's your document? I was right. Ladies and gentlemen, I give you super nerd. Shows the action. We can't just show you the flow. People at NASA have sent me instructions on how to hack the rover to Pathfinder's broadcasting frequency. Sensor 54. The whole was the entire we're putting together a supply mission. Glad to hear it. We're looking for it.
sure he didn't mean what he said. Thank you, Mr. President. Then Citizen Pasadena, so if you can't argue the other side. I sure have to ask. The coolest one now, the coolest one I got was from University of Chicago. Technically, I colonized Mars. Other than there's been a request for me to post a photograph on my volcanic engineering. What's he doing? I asked for a photo and what, he's the phone? You know, die. Well, we used the photo and the time, like a 9-month travel time, and grudgingly admit that he's doing very well. Grudgingly, I hate this margin. 912 cells worth of food, we get that. It's 1:35 now, we need this problem. All right, you called this. Goodbye. I'm gonna need a change of clothes. Probably. Sorry, also. It's a lot weird. It's only black. It's not real side. The truth is, Mars' disco music still survived. Past horizons never die on their outside.
Sorry. We know we're doing it. The modest launch will take 414 days to reach Mars. They vary slightly in fluctuation. It could almost be easier if you It's fine. Let's ask the guy. 15 days I can get it done. Alright, let's create 15 days. 13 days. 10 days of just the inspections. How often those inspections reveal the plans for countdown halt? Our contact actions. Anyone else know a safer way to buy like it but better manage to 15? And we'll cancel the inspections. God gets you with more food. You want to see what minimum calorie count looks like? Please. It is. Stretch the leg. We will get this potato in some crushed packets. Launch status check. Revealing darkness. Thrust of the launch combined with the simultaneous lateral vibration will limit our launch window and we're forced to accelerate our schedule. 太阳神的助推器，我们的工程师检查过数据，是绝对的。那么，真只是为了论证，就从航天的角度来讲，寻求合作。Thank you. With Tommy and China, we got another chance at this. Now, we finished. The landing system always sending rations with a crash land on Mars. Look up anyway. Astrodynamics. How do you know that? Why does L1 mean secret meeting? The Council of L1 is for Lord Fundle. Okay, everyone then. Target the beam is back to Mars by Sol 561. Let's pretend that this stapler could get the Earth. Right now, honey, we start accelerating. Now we're doing that. You're Mars. Now we're going too fast at this. You'll stop using the MAV. Other than that, checks out. Is it right? Yeah. What am I missing? Why is that important? We have to choose. But what about the homies clearly be asking Well, for 533 days beyond the scheduled mission, I should. But you either have a high chance of killing one person or no chance of should the commander lose his call. We still have a chance to bring fire up. We're going in option. We've got it. How's that? I know it's your private time, can I? My computer went open the attachment. Let's see.
Okay, let's see. The mechanisms. And the numbers they check out support the course. So we have the opportunity to force their hand. But not this time. This is something NASA expects. And before you answer, consider the consequences. If we had 533 days to our mission, unplanned space travel where anything could go wrong. If it's mission critical, we go home, they'll court-martial us. And for the rest of you guys, I dare motion executed. We'll override. They can take over the homies from comm systems. We can't shut down the comms because we'd lose telemetry and guidance to do it over the code. I'll get one, but like in English, like what I mean. If it does us, then we are in line. Yes. How about yes? Yes. Do we listen now? Flight guidance. What the hell? Telemetry, any chance this is instrumentation? Someone to find out who the hell what shows up smoking. Considering the sound. They may have killed the lich and kicked us out. It's bigger than one person. This mission requires 3 years of basic blocks, so NASA decided a long time ago whether they're at the scalpel or the crane or just landed. So the plan is actually in space. The oxygenator, the water climber, the atmospheric regulator, the entire planet helping me with this endeavor. And so far they've come. Switch don't you want us to do? She asked us to call. Where is it?
So in order for Mark to escape lighter, 5,000 kilograms lighter, you can do that, right? Well, there's one passenger instead of 6. The social gear, that's the controls. Well, you won't. Not to mess with Puck. I'm excited about the opportunities that affords. The friend with no backup cars? He's ignoring me. You want to take the front of the ship off? Sure. We're going to have him cover it with hard canvas. And the ship's going fast enough for their resistance to mount. We'll be high with the... Alright. Are you kidding me? Yeah, could be the first one. For space travel. That's a good thing. You ain't sure you're inconvenient. Actually, it's worse than that. You cannot use the word first. So, they're only doing the way. Fastest way to get for space travel sandwich. Let's do this. Martinez flies the nav. We first attach the tethers into a line and surround the enemy at 5 meters per second. Martinez are jumping onto it. It will be 52 minutes before intercept. Once Mark's ended with the tether, if anything goes wrong, you go out after him. Bridge to zero. Ultra fast. They'll have 39 minutes to figure out how to...
meters a second. Commander, I have an idea. Go ahead, Mike. And fly towards you. They'll be easy to control. Yes, those are all very good points. But, Commander, let's go on, man. Not the worst idea. No, it is the worst idea. It's the worst idea ever. Look at this good trick. Alright, Commander. I need you to come inside. Probably. I feel obliged to mention what's happening. Can you do it? There's a reverse thrust. Leave your suit on. Make the hunt.
map is still upright. That Martinez, the captain, would like you to please, Shut your smart mouth. I'm happy to turn the radios off from here, Commander. Just say the word. To my countryman, Vogel. Accepted. How many samples? We have a mission update. Storm warning. Yeah, they upgraded their estimate. Martinez, how's it look? On current escalation, estimated force of 8,600 newtons. Begin abort procedure. They are estimating with a margin of error. Prep emergency departure. Visibility is almost zero. Anyone gets lost? Okay! Commander, we're at 10 degrees and the map is going to tip at 12.3. Anchor it with the rover! What happened? He was hit! Why did he report? Before we lost Totney. Bench? Yeah! How long can he survive decompression? We're at 10.5 degrees. Break for lunch. What about you, Commander? I'm not so tolerable! Why did he report? Lost at 11.6 degrees. Can you hear me? From orbit, now a little piece of metal from the single suit. Give it a try. Nothing? You ever see the app? What the hell is wrong with you, man? My friend just got out of the minute about 2 Guys, we never got back. We got one more trip left, and then I'm following orders, Commander. On my way! Where we going? Your command. At 6:45, the storm had escalated to severe and we had no trouble. We were all able to reach the Mars ascent vehicle and perform. Watt was struck by debris and killed. He is dead. Oxygen level critical. Pressure stay. In case I don't make it. It is Hive. Obviously, but super high communications antenna broke off and tore through my biomonitor in my suit, which kept me alive, even though the crew must have thought I was a manned mission can reach me. And I'm in a hab designed to implode, and if by some miracle, yeah.
sweet and sour chicken. For redundancy, they send 68 souls worth of food. That's to grow 3 years worth of food here. Botanist. Separate into N2 and H2. History of humanity. Nothing bad has ever happened from the space thing. So, everything they sent us up here with is flame. I'm sorry, Martinez, but if you didn't want me to go through your stuff, you shouldn't have left me for counting on you. Burned down the space program. Serving in our space program. While his loss will be, oh, they honor the legacy Mark's leaving behind. You have a lovely speech, by the way. Together, we say. Next. No, Ares 3 evac after 18 sols. There's half a mission. Ares 4 supply missions coming up. We should be focusing on the Schiaparelli craters. Okay. The second we point the satellites at the HAP, I broadcast pictures of Mark Watney. Paperclip. I put a dead astronaut on the front page of the Washington Post. He covered in sand from normal weather activity within a year. Well, we can't wait. Okay, consider this. Now, we don't say that's the purpose of the mission, but we make it clear that that would be... Yes, him. Yes, it's an emergency. You've got to be shitting me. Prove it to me. Wind. Back it up. Look at Rover 2. No, not likely. Well, why don't we just ask Lewis? Let's get on Capcom and ask her to... On a trip home. Space travel is dangerous. They need to be alert and undistracted. But they say, Dear America, remember that astronaut we killed and... How are we going to handle the public? Legally, we have to... Right, he's going to starve to death long before we can help him. Give up on it. And what does that do to him psychologically? I'm definitely going to die up here. If I have to listen... No, I'm not going to turn the beater. With Mark Watney. We're working on it. Does he have enough supply?
3,200 kilometers away. 32. Which means I have to get to the crater. Battery has to be recharged at the hab. That's problem A. So I gotta live for 50 days inside a rope. I'm gonna have to science the shit out of this. I have doubled my battery. I will burn through half my battery by the laws of thermodynamics. I would love... I can't. I'm calling it. Good news. If I remember my training correctly, one of the lessons was titled Don'ts, which is why we buried it when we arrived. And planted that flag. It said everything will be fine out loud. Look, the point is, I'm not cold. And right now I got bigger problems on my hands. I have scoured every... We believe that he's preparing for a journey. He's been conducting incremental... Give the hat. Well, we think that he plans to travel to the Ares 4 launch site. Power to bring him home alive. Thank you very much. I try to say something proactive and positive. Annie? Yes, sir. Mark drove 2 hours straight. Reclaimer? Every 41 hours, there's a 17-minute gap. It's just... Authority over satellite trajectories and orbital adjustments. Make it happen. But he's smart enough to figure out that's his only chance. Bruce, what's 6 months to build it in the first place? 3 months. Say something like the overtime alone will be a nightmare. The overtime alone will be a nightmare. This? I don't want to decide what's best for the crew. Bruce says 3 months to get the payload done. That's all that matters right now. I planted the potatoes, so now it's time to reap and re-sow. The plant's alive. The smaller ones I'll reseed, the larger one. And by the way, none of this matters at all if I can't figure out a way to make contact. I know what I'm gonna do. He hasn't changed course for 13 days. He's nowhere near that obstacle. This has a daily a Planitia. There's nothing out there except I need a map. Okay. Can I borrow this? Okay, so where's the hab location? I'd like to point out it lasted 3 times longer. Vincent Kapoor, Director of Mars Missions, Master. This is our current team. Okay, let's see it. That's fine. Status, listening for telemetry signal. Incoming. You point the camera at yes. 32-minute round trip communications time. Just point the camera. Roger that. Point 10, the camera. So here's the rub. Somehow, from 1996. It can't be our alphabet. 26 characters.
to decimals. And I was right. Ladies and gentlemen, I give you super nerd. Seriously, Johansson. It's like the Smithsonian of loan. People at NASA have sent me instructions on how to hack the rover to Pathfinder's broadcasting frequency. And we're in business. Sensol 54. The whole world. Meantime, we're putting together a supply mission. Glad to hear it. Really looking forward. We need them to concentrate. What is wrong with you? All over the world. Oh my God. I'm sure he didn't mean what he said. Thank you, Mr. President. Vincent is in Pasadena, so he can't argue the other side. What should we have to answer to? Data dump is almost complete. Should be pictures of the party. Got a batch of personals. Dispatching them to your library, man. Oh, there's a video message? It's Hi, hello, it's Mitch, live. Oh my gosh. I know that's a surprise. We found out 2 months ago, and we finally have communication with him. And Mark stresses that every time it comes out. Send all the questions you want, we'll answer them. Yeah. You were following orders. And I got a room full of people trying to micromanage my crops. So, one big bonus to the coolest one though. The coolest one I got was from University of Chicago. Technically, I colonized Mars. In other news, there's been a request for me to pose for a photograph on my coquettish ingenue. But What is he doing? I asked for a photo and what, he's the fox? You know, die. So, we'll release the photo when we detail. It'll be tight, but we'll make it. 9-month travel time. Well, they grudgingly admit that he's doing great work. Grudgingly. I hate this margin. 912 sols worth of food. We get there on 8. Oxygen level 5%. Suit pressure stable.
there that survived died in the sub-zero test. So, get him 200 souls. Long dead. We're gonna have to launch as soon as possible, which changes our... It's all 1:35 now. We need this proof. How about you call Bruce? I'm gonna need a change of clothes. Apparently. Sorry, also. It's a lot roomier. It's only botany. It's not real science. Dear Martinez, Mars's disco music still survived. Vast horizons. Every day I go outside. I said, hello. Sorry. Look, I know we're coming at... That models for launch will take 414 days to reach Mars. They vary slightly in restoration. Heck, it'd almost be easier if you, Fine. Alright, let's ask the very... 15 days and I can get it done. Alright, let's create 15 days. 13 days. 10 days of tests and inspections. How often do those inspections reveal the bounds for countdown halt? Oh, I can't take that chance. Anyone else know a safer way to buy like it, but that'll get us to 15. And we'll cancel the inspections. Absurd. Probe gets here with more food. You want to see what minimal calorie count looks like? These every 3 days. And now, the point is... Stretch the rack. I'm gonna dip this potato in some crushed bacon. Beginning launch status check. Moving drop instant. Inside. 10, 9, 8, 7. Good thrust. She's running on. We good? Flight is hitting the red line. Lost readings in the full flight. Lost it flight. LOS here too. Give us a short Stockton. Report. Commander Lewis, I need you to check in on my parents. I'm talking to a couple about I'm asking you. I'm not giving up. Tell them I love them. And I'm dying. Thank you for being Thrust of the launch combined with the simultaneous lateral vibration. To make our launch window, we were forced to accelerate our schedule. 太阳神的助推器，我们的工程师检查过数据，是绝密的。那么，仅仅是为了论证，就从航天的角度来解决问题，寻求合作。 Thank you. Uncle
Tommy in China, we get another chance at this. Now, we finished... The landing system, we're only sending rations. We can crash land on Mars. All right. I'm gonna cut it away. Astrodynamics. Yeah. How do you know that? Why does Elrond mean secret meeting? The Council of Elrond is for Lord Findle. I hate every one of you. Study this. Get the Hermes back to Mars by Sol 561. Right there, great. Okay, let's pretend that this stapler... Cool, Teddy, you're Earth. And right now, the Hermes... We start accelerating. While we're doing that... You're Mars. Now we're going too fast at this. Intercept using the MAV. I've done the math. Checks out. Is he right? Yeah. What am I missing? Why is that important? We have to choose. But what about the Hermes crew would be asking? For 533 days beyond the scheduled mission. Bill. You either have a high chance of killing one person or a low chance of... Should be Commander Lewis's crew. We still have a chance to bring 5 out. We're going without you. You got it. Einstein? Yeah? I know it's your private time. Can I... My computer went over the attachment. Let's see. This isn't a JPEG looking at. It's, does that make any sense? And the numbers they check out. It's a brilliant course. So... We have the opportunity to force their hand. Up to you. Not this time. This is something NASA expressed. And before you answer, consider the consequences. If we had 533 days to our mission. Unplanned space travel where anything could go wrong. If it's mission critical, or we go home, they'll court-martial us. Oh yeah, there's that. And for the rest of you guys, I guarantee... Course and execute it. Remote override. They could take over the Hermes from comm systems. We can't shut down the comms because we'd lose telemetry and guidance to jump over the code. Okay, but like in English, like what would that mean? If we do this, it'll be over 9. Yes. I vote yes. Yes. Delia missile man. Flight guidance. What the hell? Telemetry, any chance this is instrumentation? Somebody find out who the hell Rich... Sounds like a smart move. Considering the signal. You may have killed them, Mitch, when you keep us airborne. It's bigger than one person. Nation. This mission requires 3 years of pre-supplies. So NASA decided a long time ago, already there at the Schiaparelli crater, just waiting. So the plan is catch me in space. The oxygenator, the water reclaimer, the atmospheric regulator, the entire planet helping me with this endeavor. And so far they've come...
Mars is I'm in international waters, so here's the cool part. I'm about to leave for the scout. Oh, that means I'm going to be taking a craft over in international waters, base pirate. Feeling. 4.5 billion years. Nobody here. Before noon, lays the solar panels, waits 13 hours. How's he doing? He asked us to call. Where is he? Orbit. So in order for Mark to escape... A lot lighter, 5,000 kilograms lighter. Well, you can do that, right? Well, there's one passenger instead of 6. With suits and gear, that's the controls. Well, he won't. Martinez will pilot. But I am excited about the opportunities that affords. Different with no backup comms? No, he didn't. You want to take the front of the ship off? Sure. We're going to have him cover it with pad canvas. Find the ship's going fast enough for air resistance to matter. It'll be high enough to... No. Yeah? Mm-hmm. Or like, are you kidding me? Yeah, I could be the first one. I'm healthier than any man in the history of space travel. Like that's a good thing. Launching me in a convertible. Actually, it's worse than that because not use the word fast. So they're only doing the way the fastest man in the history of space travel sounds. I'm not going to tell them that. Let's do this. Grab the MAV at 5 meters per second. 10 is like jumping onto a moving train. And it'll be 52 minutes before intercept. Once Mark's engine with the tether. If anything goes wrong, you go out after him. There's a mood of tension and anxiety here outside Johnson Space Center as you have some contact with them, but it hasn't been very much. We have to remind our viewers of making contact with Mark Rodney. Let's listen. Hold it. Not a damn thing. So, they're on their own.
distance from his actual, we proceed on schedule. I'm anxious to get up to. Well, tell that asshole no barrel rolls. Secondary recovery. Go. Pilot. We are go for launch. T-minus 10. On. 50 meters. It's too low. It's fighting me. Checking. Whitney. Name shut down in 3, 2. Fuel reserves depleted. Make that work. Distance at intercept will be... Come on, guys, keep it together, work the problem. Your hands in. Time to... Depends how much fuel you want to save for the altitude adjustments for the trip home. How much remaining altitude adjust fuel? That'll bring the intercept range to 0. Way too fast. Then we'll have 39 minutes to figure out how to... Whitney? Affirmative. How are you? Well, we're working on getting to you. There was a complication during the... How big a problem? 42 meters a second. Well, Commander, I have an idea. Go ahead, Mark. And fly towards you. It would be easy to control. yes, those are all very good points. But, Commander, let's go Iron Man. Not the worst idea. No, it is the worst idea. It's the worst idea ever. You want to open the vehicular airlock? It'll give us a good kick. Yeah, but also load the nose. Vogel, Go ahead, Commander. I need you to come inside. Probably. But I feel obliged to mention that's... Copy that. Can you do it? Use a reverse thrust. Beck, leave your suit on. Meet Johan. I want all the memorials back home to be about me. Just a minute. Let's just hope this is a good idea, guys. It is. Better when this thing goes off. Don't tell anyone I did that. Bomb set. Benson, 260 meters approximate. It's too far. Commander! Martinez, close to the... Time to valve low after initiate. 15 seconds. Debate. I'm not risking another crew member. Vic's returned. 3, brace for deceleration. 2. Hook me up. 312 meters. Did you say 312? Mark, report.
Welcome to the astronaut candidate program. Out of the way right off the bat. Yes, I did in fact survive again. The other question I get most frequently is, and that's one you need to know going in because it's going to happen to you. It's going to go south and you're going to say, this is it. This is how I end. You just begin. You do the math. All right. Questions? The Ares 5 team will rendezvous with the Hermes approximately mission to the Ares 5 program. And what do you hope to achieve this? Flight guidance check complete. Copy guidance. Need about 20 seconds. Proceeding with 4, 3, 2, 1. Pressure for business. सब लोग सावधान। आज तुम्हारा मिशन है एक कीड़ों की कॉलोनी को खोजना और उसे खत्म करना। जानकारी मिली है कि ये एक लेवल 2 मिशन है। इसका मतलब कि हमारा मुकाबला करीब 1000 कीड़ों से होगा। हम जानते हैं हमें क्या करना है, सबको खत्म करना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो बताओ प्लान क्या है लेफ्टिनेंट? जी सर। जियो, पहली टीम जाते ही लैंडिंग जोन सुरक्षित करेगी। कमाचो, हम कीड़ों की कॉलोनी का एंट्रेंस ढूंढेंगे सर। 101, उन पर गैस का हमला करेंगे। उससे कीड़े मरते हैं मगर हमें कुछ नहीं होता। बाबा, अरे बाप रे, वो तो मैं ही हूँ। न्यूक्लियर अटैक, लॉन्चर को तैयार करो और पर अभी नहीं। डच, मैं और मेरी जानेमान सब संभालेंगे। घर में घुस कर मारेंगे। ईगल 1 टेक ऑफ के लिए तैयार। अपनी ट्रेनिंग याद रखना और प्लान के मुताबिक ही चलना। सब समझ गए? उनके छक्के छुड़ा देंगे। तो तैयार हो जाओ। शौक से चलो कर दिखाएं। तो चले जानेमान।
Eagle 3 clear. Eagle 1 लैंड करेगी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This movie is encoded by Toon World for all.me. क्या प्रॉब्लम है लेफ्टिनेंट? मारो उन्हें। अपनी अपनी जगह पर आओ जल्दी। आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है? अभी डरने का वक्त नहीं है जवान, मेरे पीछे आ जाओ। मिसाइल तैयार है। क्या बात है? कमाचो तुम्हारे पीछे। कमाचो। कर्नल रिको। पीछे हटो, एक साथ रहो। अरे नहीं, इन्होंने हमें फिर से घेर लिया। गैस बम की बारी। ये क्या किया? गैस के जाने का इंतजार करो। पीछे हटो। कर्नल रिको, सर आप कहाँ हैं? ये कौन था? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेफ्टिनेंट, इंफ्रारेड का इस्तेमाल करो और अपना सिर नीचे रखो। ओह मेरा इंफ्रारेड। ओह ये रहा। वो तुम्हारा इंफ्रारेड नहीं था लेफ्टिनेंट। तो वो क्या था सर? वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। दरअसल सर एक बात बताओ, ये कीड़े हमेशा मुझे ही नोच क्यों खाते हैं? कीड़ों को शायद तुम टेस्टी लगते हो दोस्त। कर्नल, किसी ने हमें बताया नहीं कि ये एक जाल था। ये गलत बात है। एक राज की बात बताता हूं तुम्हें लेफ्टिनेंट, जंग में कुछ सही नहीं होता और सब कुछ एक जाल होता है। अपने प्लान्स कैंसिल कर दो ट्रूपर्स, हम ये कल फिर करेंगे। माफ कीजिएगा सर, शायद आप भूल गए, कल एयर डे है। हम फिल्टर्ड मार्टिन एयर की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। एयर डे? हाँ सर, हमारे लिए ये टेराफॉर्मिंग बहुत मायने रखता है। ताजा हवा का महत्व एक मार्टिन से ज्यादा किसे पता होगा सर? मेरी मोबाइल इन्फेंट्री में कोई मार्शियन नहीं है लेफ्टिनेंट, सिर्फ ट्रूपर्स हैं जो ऑर्डर्स मानते हैं। समझ गए? समझ गए सर। कल इसी वक्त मिलेंगे ट्रूपर्स। डिसमिस्ड। ये सब क्या था? तो बताओ वो नए मार्शल ट्रूपर्स कैसे हैं? तुम तो सब देख ही रहे हो, तुम जानते हो। यकीन मानो सब देख रहे हैं। फेडनेट पे इससे ज्यादा मजेदार वीडियो शायद ही होगा। मैंने लॉस्ट पेट्रोल बुलाता हूं, मन करता है इन्हें कीड़ों को खिलाकर नई टीम बनाओ। इन मार्स के किसानों के बच्चों से कितनी उम्मीद रख सकते हैं? ये बात समझ नहीं आ रही कि मुझे इतनी शांत जगह पर क्यों भेज दिया फेडरेशन ने। रुको,
इसका जवाब मत देना। वो मेरी जिंदगी नर्क बना सकते थे, क्योंकि मैं एक लौता ऐसा कमांडिंग ऑफिसर हूं जिसने एक अरैक्निड क्वीन को टेरेन तक पहुंचने दिया। अपने आप को इतना दोष मत दीजिए कर्नल। अगर आप वो ट्रिगर दबा देते तो हम सब मारे जाते। शुक्रिया रैट्सस, मुझे उन यादों को भूलना होगा। कॉफी पियोगे क्या? पर आप ये तो देखिए। कॉलोनियल ड्यूटी हर किसी के बस की बात नहीं है, पर मार्स एक अच्छी जगह है कुछ दिन आराम करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है मुझे आराम पसंद होगा? किसी कीड़ों के प्लेनेट पर भेज देते हैं, वहां कुछ तो काम करता। मार्शियंस आराम की जिंदगी पसंद करते हैं। आप जानते हैं, अगर वो फेडरेशन से अलग हो गए तो वो कीड़ों के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना बंद कर देंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखो, मेरी मोबाइल इन्फेंट्री में कोई मार्शियंस नहीं है लेफ्टिनेंट, सिर्फ ट्रूपर्स हैं जो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, समझ गए? और मेरे ऑर्डर्स हैं सभी अपने कमरे में बैठो और बिल्कुल भी मस्ती मत करो। सही बात है। असली ट्रूपर्स डे भी नहीं मनाते, असली ट्रूपर्स सांस भी नहीं लेते। वैसे लोग जो कहते हैं वो शायद सच ही होगा। मार्शियंस वाकई अक्लमंद नहीं होते। जब मैं स्कूल में था तब लोग मेरे बारे में भी यही कहते थे। तुम पागल हो। ये पागल है। देखना चाहिए ना। तुम सब पागल हो। तुम हमेशा सही कहते हो। मार्शियंस और उनकी बेकार ताजा हवा, मुझे तो इस हवा से सिर दर्द हो रहा है। हे, वो देखो। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम एक ही उसी पर एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं। क्या बात है? ये बात क्या है रिको? तुम्हें जाने नहीं मिला इसलिए बुरा लग रहा है? मैं एक ट्रूपर हूं, मुझे लड़ना पसंद है। अजय डे है, पर मार्स की हवा में एक अलग ही बात है। देर रात तक चलने वाली पार्टीज के अलावा मार्स के लोग इस दिन के जरिए मार्स की आजादी की भी बातें करते रहे हैं। हाल ही में हुए रिसर्च के अनुसार 3 में से 1 मार्शियन इस लड़ाई से थक चुका है, जिसे मार्स का कोई लेना देना नहीं, और 73% लोगों ने कहा है उन्हें बियर पीना पसंद है। वाह, लगता है मार्स पर तो मजे चल रहे हैं, पर मजे बच्चे करते हैं। 26 की उम्र में स्नैप फेडरेशन की सबसे युवा स्काई मार्शल हैं। फेडरल साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि वो शायद आज तक की सबसे होशियार मार्शल हैं। जंग के वक्त या तो तुम लड़ाई का हिस्सा होते हो या फिर मुसीबत होते हो। तो क्या आपको लगता है कि बाकी फेडरल कॉलोनीज भी आजादी की मांग कर सकती हैं? नहीं, मार्स की बात अलग है, जहां लोगों के अहंकार और उनकी स्वार्थी सोच ने उनकी नैतिक जिम्मेदारियों पर प्रभाव डाला है। एक आखिरी सवाल हमारे युवा दर्शकों के लिए, स्काई मार्शल, क्या आप कभी भी किसी बारे में गलत हुई हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। और जानना चाहेंगे आप? AQZ को करारा जवाब देने के लिए स्काई मार्शल स्नैप ने कीड़ों पर एक पूरी फ्लीट के साथ हमला किया है। आज क्लंदातु इन्वेजन को 20 साल पूरे हुए हैं। शायद इस बार यह मिशन पूरी तरह से फेल नहीं होगा। कुछ और जानना चाहेंगे आप? इंटरस्टेलर फ्लाइट 103 जिनेवा के लिए 51 नंबर गेट से बोर्ड कीजिए। कार्मेन, कार्मेन। स्टेटस रिपोर्ट, कोड रेड +1 गिनती जारी है। काफी कोहरा है वहां। कार्मेन, 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 कार्ल बोल रहा हूं। कार्ल, आप ठीक है मैम? लैंडिंग पर ध्यान दो।
देखो, अब मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ वो एक राज है, तो बात मत करना। अगर तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं कितनी बिजी हूँ कार्ल। प्लाज्मा से हमला हो रहा है, एक दूसरे से दूर रहो और ब्लास्ट से बचो। सिर्फ तुम ही हो जो अब मदद कर सकती हो कामिन। अब इस बार क्या हुआ? तुम्हें जॉनी तक एक मैसेज पहुंचाना है। जॉनी तो मार्स पे है ना, और तुम उसके ज्यादा नजदीक हो। पर मैं सिर्फ तुमसे इस तरह से बात कर सकता हूँ। हाँ, जॉनी है भी मोटी खोपड़ी वाला। हाँ, 1 मिनट रुको। कार्ल, प्लाज्मा हमारी तरफ आ रहा है। ऊंचाई बनाए रखो। ओके, तो अब सुनो। तो तुम चाहते हो कि मैं AQZ में अपने मिशन को छोड़कर मार्स पर जाऊं, वो भी अभी? जिनीवा के लिए फ्लाइट 103 की बोर्डिंग शुरू हो। अभी जाना बेहतर होगा। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या है? नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम्हें पता ना हो। इशिजुका पर सीधा हमला हुआ है, भारी नुकसान पहुंचा है। हाँ, क्यों बताओगे? तुम्हें ये खेल पसंद है। तुम बिल्कुल नहीं बदले है ना कार्ल? नहीं, और ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। तुम्हें जॉनी को ढूंढना होगा। एमी स्नैप मार्स से बहुत परेशान है और तुम अच्छे से जानती हो कि वो कैसी। मोबाइल इन्फेंट्री उतरने के लिए तैयार। मोबाइल इन्फेंट्री उतरने के लिए तैयार। आपकी यात्रा सुखद हो सर। शुक्रिया। तुम कुछ तो जरूर छुपा रहे हो कार्ल। हाँ, जानता हूँ। अगर मार्स की सच्चाई कभी बाहर आती है तो फेडरेशन तबाह हो जाएगी। क्या सच्चाई इतनी बुरी है? 6 यूनिट्स उतरने के लिए तैयार हैं। हाँ, मुझे अफसोस है। रुक जाओ। खैर, जो भी हो, गुड लक। क्या बस गुड लक? हाँ, हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। दोनों हाथ ऊपर रखो। ये मेरे दिमाग पर तो तुम जाओगी ना? पर वो मुझे मिलेगा कहाँ? मार्स के रेगिस्तान में, कहीं वेलमेरिनरिस के आसपास। PSI की तरफ से हेलो। कार्ल, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कार्ल, कार्ल, जेंकिंस हमारी कस्टडी में है। ऑर्डर्स का इंतजार है। इसे सुला दो। मैं देख लूंगा एमी। सिमुलेशन, काय का सिमुलेशन। पता है, कीड़े भी अपनी गलतियां नहीं दोहराते। शायद हमें किसी आसान मिशन से शुरुआत करनी चाहिए सर। हॉट LZ-1 आसान मिशन ही है लेफ्टिनेंट। अगर तुम्हें कीड़ों के बच्चों को दूध पिलाना है तो अलग बात है। शायद एक जीत हमारा मनोबल बढ़ा सकती है। वो क्या है? प्लाज्मा वाले कीड़े। ये हो क्या रहा है? मार्स पर कीड़े? ये ट्रेनिंग का कोई नया तरीका है सर? नहीं, ये असलियत है ट्रूपर। सबको आर्मर पहनने के लिए बोलो जल्दी। जी सर। क्या हालात है? सतह पर कीड़े पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं और उनके साथ प्लाज्मा कीड़े भी हैं। हाँ, वो तो पता चल गया। इसे लेवल 4 का इन्फेस्टेशन करार दिया गया है। सेकंड मास मोबाइल इन्फेंट्री को भेज दिया गया है और वो उनसे लड़ रही है। लेवल 4, इसका मतलब जानते हो? ये सतह के कुछ वीडियोस हैं। फेडरेशन
स्टेशन से हमारा संपर्क टूट चुका है सर। यहाँ तो हम मारे जाएंगे। जल्दी से शिप को खाली करना शुरू करो। जी सर। लाइट वे पर प्लाज्मा अटैक हुआ है। मैं लॉस्ट पेट्रोल को लड़ने नीचे ले जा रहा हूँ। तुम उन मार्शियन बच्चों के साथ जाओगे? पागल हो गए हो तुम। किसी न किसी को तो उन कीड़ों को रोकना होगा। हमने ट्रेनिंग की है और आज कयामत का दिन है। तुम तो लड़ाई का नाम सुनते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते हो। रिको, चलो मैं भी आता हूँ। उठो जल्दी, चलो। जहाज की सुरक्षा खतरे में है। इमरजेंसी सिस्टम्स शुरू कर दिए गए हैं। तुम्हारा स्टेटस क्या है लेफ्टिनेंट? पावर सूट्स पहन लिए हैं सर। सावधान, सबको यहाँ से निकालो। स्टेशन कभी भी फट सकता है। माफ करना सर, क्या आप दोबारा कह सकते हैं? इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है। सबको शिप पर ले चलो। इवैक्यूएशन कीड़ों का आखिरी वक्त आ गया है। ये नहीं हो सकता, हम तो मरने वाले हैं। तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है लेफ्टिनेंट। कोई चाहता था कि मैं यहाँ रहूं और वो जो भी था जानता था कि मार्स पर कीड़े हैं। कर्नल रिको। लॉस्ट पेट्रोल, आज मौका है खुद को साबित करने का। हम मार्स की जमीन पर जाएंगे अभी। मार्स तुम्हारा घर है ट्रूपर्स, और आज उसे तुम्हारी जरूरत है। जो कीड़ा दिखे उसे मारो और अपने प्लैनेट को आजादी दिलाओ। हाँ सर। ट्रेनिंग हो चुकी ट्रूपर्स। सार्जेंट मेजर रैट्सैस हमारे साथ चलेंगे। ये तो बहुत बड़े लेजेंड है। तो चलो कर दिखाएं। तो ट्रूपर्स लड़ने के लिए तैयार हो? ड्रॉपशिप की ओर चलो, जल्दी चलो ट्रूपर्स। अपने सूट को 0 प्रेशर पर सेट कर लो ट्रूपर्स। रेडियो टेस्ट, सबको आवाज आ रही है? ओके, 101 ओके, कमांडो ओके, डच ओके, जियो ओके। कर्नल रिको, हालत खराब लग रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी शिप के अंदर। हमें यहां से निकालो। जी सर। इस हैंगर का दरवाजा नहीं खुल रहा है, आगे नहीं जा सकते। हम रुकेंगे सिर्फ तब जब मैं कहूंगा। सब शिप पर आ गए? जी सर। कर्नल, कोई फायदा नहीं है, हम फंस चुके हैं। शायद ये काम नहीं करेगा कर्नल। बिल्कुल काम करेगा। मेरे सूट को तुम्हारे वेपन सिस्टम से जोड़ो। ठीक है, तैयार, फायर। चलो आगे बढ़ो। क्या होगा? अपनी ट्रेनिंग याद रखना ट्रूपर्स, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये शिप क्रैश होने वाली है सर। क्या आप कूदने के लिए तैयार हैं? हम कूदने वाले हैं? वक्त आ चुका है ट्रूपर्स, हम पीछे के दरवाजे से कूदेंगे। मर्जी तुम्हारी है, यहाँ बैठे बैठे मरो या बाहर मैदान जंग में मरो। रिलैक्स, आज मरने के लिए अच्छा दिन है।
बात यह है कि सिर्फ 88% लोग ही नीचे पहुंच पाते हैं। देखते हैं हम में से कौन बचता है। हम जमीन से करीब 500 मीटर ऊपर हैं। लेट्रो स्टार्ट करो। 3, 2, 1। एक बार करते हैं तो बार बार करने का मन करता है। बिल्कुल पिज्जा खाने जैसा। उससे भी बेहतर। पर पिज्जा से बेहतर नहीं है। मोबाइल इन्फिनिटी में तुम्हारा स्वागत है। अब बक बंद करो और कीड़ों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आप क्या बोल रहे हैं सर? नीचे देखो लेफ्टिनेंट। जमीन पर तो हर जगह कीड़ा ही है। आप क्या करें सर? गोलियों से खून दो। ओह हाँ, तब तो मार दो ट्रूपर। लैंडिंग के लिए एक जगह खाली करो। फॉर्मेशन में रहो। जहां हो वहीं रुको। लेफ्टिनेंट यहां पर आओ। नहीं आ सकता सर, बहुत ज्यादा कीड़े हैं। ठीक है, बस अपनी जगह बनाए रखो। लेफ्टिनेंट बाबा, नियो के इस्तेमाल मत करना। अब गाँव कर्नल, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारी बाईं तरफ 800 मीटर दूर। अरे यार, रिलोड। मैं भी। पहले मैंने बोला। तुम ठीक तो हो? लगता तो है। राजसास, क्या खबर है? लेफ्टिनेंट जाओ सार्जेंट मेजर का पता लगाओ। जी सर। कर्नल ये देखिए। इन्हें क्या हो गया? अभी पता करता हूँ। सार्जेंट मेजर? लगता है इनके सूट का सील टूट गया और ये स्पेस में जम गए। सलामी देंगे। लॉस्ट पेट्रोल, अभी काम बाकी है। और भी कीड़े आ रहे हैं। थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करो। फिर से। अपनी पोजीशन पर रहो। मेरे पीछे आओ। प्लाज्मा वाले कीड़े, अगर आज रात इन्हें खत्म नहीं किया तो सुबह तक ये मार्स पर कब्जा कर लेंगे। सिग्नल तोड़ो तो सैटेलाइट फोटो ले लेता है, पर फेडरेशन को ये नहीं दिखा। हाँ, ऊपर से किसी ने बहुत बड़ी गलती की है। न्यूक्स तैयार है? लेफ्टिनेंट, तुम्हें मेरे टारगेट कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं? यस सर। कमाचो आ गया। फायर करने के लिए तैयार? मैं भी तैयार हूँ। टारगेट सामने है। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी। 3, 2, 1। ये रैजास के नाम। फायर। दिखा दो मार्स से उलझने का अंजाम। पीछे हटो ट्रूपर्स। रेट्रो इस्तेमाल करो। रॉकेट फ्यूल पर ध्यान रखना। कमाल की लैंडिंग थी। संभालो अपने आप को लेफ्टिनेंट। धमाके के लिए तैयार?
हमने उन्हें अच्छा सबक सिखाया ना? हाँ, और अब उनके दोस्त आएंगे हमारी खातिरदारी करने। रेस्क्यू शिप कब आने वाली है सर? क्या तुम उनके भरोसे बैठे रहना चाहते हो? चलो मेरे साथ। मेरा मतलब वो हमें बचाने के लिए कोई ना कोई मदद तो भेजेंगे ना सर? हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ? अल्फा स्क्वाड में आधे मारे जा चुके हैं। डेल्टा स्क्वाड वापसी की तैयारी में। मुझे तो ये मिशन नहीं खुदकुशी लगने लगी है। कैप्टन, फेडनेट ने मार्स पर कीड़ों के हमले की खबर बताई है। कीड़ों ने पूरे ग्रह पर कब्जा कर लिया है। क्या? कैप्टन, फेडरेशन की 2 स्टारशिप्स हमारी तरफ आ रही हैं। रिपोर्ट। आईडी पता नहीं चल पा रहा है। जॉन ए वार्डन, हम स्पेशल ब्रांच से हैं। स्पेशल ब्रांच से? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कैप्टन कार्मेन इबानेज, आपको इस शिप की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है। अपनी कमांड छोड़ दीजिए और शिप हमारे हवाले कर दीजिए। ये सब हो क्या रहा है? किसने दिए हैं ये ऑर्डर्स? स्पेशल ब्रांच किसी को जवाब नहीं देती, पर अगर ऐसा नहीं किया तो ये फेडरेशन के साथ गद्दारी होगी। सरेंडर कीजिए वरना हम अटैक करेंगे। उनकी शिप भी हमारी जैसी है मैम। फिर तो ये अच्छी बात है। जहां हो वहीं रुक जाओ। कार्ल, पता नहीं क्यों पर तुम पर भरोसा कर रही हूँ। जॉनी वार्डन भागने की कोशिश कर रही है सर। इसका दिमाग खराब हो गया है। फायर करो। घबराओ मत, वो हमें छू भी नहीं पाएंगे। हम उनके ब्लाइंड स्पॉट में हैं। बेकार डिजाइन है। कैप्टन, हमारी स्पीड कम हो रही है और हम गिर रहे हैं। हाँ जानती हूँ। मेरे इशारे पर मेन थ्रस्टर चलाना। हम इनसे बचते हुए सीधे मार्स के लिए रवाना होंगे। मार्स के दृश्य हमें एक रोमांचक कहानी बता रहे हैं। हमारी एक छोटी सी ट्रूपर्स की सेना और लाखों कीड़ों के बीच जंग चल रही है और फिर अचानक मार्स पर अंधेरा छा गया। फेडरल साइंटिस्ट का मानना है कि एक कीड़ों से भरा उल्का पिंड तकरीबन 3 साल पहले मार्स की जमीन पर आ गिरा था। ऑफिशियल्स ने अभी तक कोई खबर जारी नहीं की है। हम नहीं जानते कि मार्स के निवासियों में से कोई भी उन कीड़ों से बच पाया है या नहीं, पर हमें इस दुर्घटना के लिए किसे दोषी मानना चाहिए? फेडरल साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दोषी मार्शियंस हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि मार्शियंस जो आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं वो मांगे भी गलत हैं। बच्चों की जिद है और इससे इंसानों की जिंदा रहने की जंग में हार का खतरा बढ़ सकता है। क्या आप और जानना चाहेंगे? ये सिर्फ हमारी सुरक्षा की बात नहीं है, हमारे कर्तव्य की है और हमारे भविष्य की है। सही कहा, क्योंकि सुरक्षित भविष्य ही सबका अधिकार है। ये तो अच्छा है, काफी अच्छा है। डैनियल। हाँ एमी। आज के आंकड़े क्या कह रहे हैं? आपकी अप्रूवल रेटिंग 82.5% तक पहुंच चुकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या बात है? ये ऐतिहासिक है। पहले किसी स्काई मार्शल को इतनी ज्यादा रेटिंग नहीं मिली। हाँ, पर अभी और बेहतर हो सकती है। लोग मार्शियन से जितनी नफरत करेंगे उतना ही आपको पसंद करेंगे। वैसे एक बात पूछूं, क्या हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं? तो मुझे बताओ, क्यू बॉम्ब तैयार है? हाँ, पर मैं नहीं जानता कि लोग अभी तैयार हैं या नहीं। वो तैयार है, बस वो ये बात अभी तक जानते नहीं। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट तैयार रखूं? हाँ, और इस बार उसमें कुछ इंस्पिरेशनल लिखना। और अगर हो सके तो थोड़ा इमोशनल भी। सही कहा, क्योंकि सुरक्षित भविष्य ही सबका अधिकार है। अब सिर्फ एक चीज की कमी है, एक विलेन की।
गद्दार अभी तक सो रहा है, अपने हाई स्कूल के सपने देख रहा है। हाई स्कूल? सच में? क्या तुम सोच भी सकते हो कार्ल जेंकिंस हाई स्कूल में कैसा होगा? जगाओ इसे। तुम्हें कीड़ों से इतना लगाव क्यों है कार्ल? दरअसल दुश्मन को हराने के लिए उसे जानना जरूरी होता है, और मैं रोज कोई नई चीज सीखता हूँ। और तुमने आज क्या सीखा? कि कोई मार्स पर हमला करवाना चाहता था। और वो कोई तुम नहीं हो। तुम जहाँ थे वहाँ से ये आसानी से कर सकते थे। एमी, प्लीज, तुम मार्स के साथ क्या करने वाली हो? मैं उन्हें खुद को बर्बाद करने से रोक रही हूँ। एक क्यू बॉम्ब से? रियली? ये है तुम्हारा सॉल्यूशन? कम ऑन एमी, ये फेडरेशन के लिए है ना, या तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग्स के लिए? बस बहुत हो गया। तुम्हें मेरी रेटिंग्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कार्ल। बस थोड़े से धमाके चाहिए और मेरी रेटिंग्स आसमान छू लेंगी। आराम करो और शो का मजा लो। क्या कीड़े वापस आ रहे हैं कर्नल? हाँ, हम पर नजर रखे होंगे। नजदीक आने से डर रहे होंगे कि हम उन्हें बॉम्ब से उड़ा न दें। बस उन्हें बताना मत हमारे न्यूक्स खत्म हो चुके हैं। वो कीड़े इतने जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। यकीनन वो भी हमारे न्यूक्लियर अटैक से तंग आ चुके होंगे। 45 डिग्रीज। नहीं। क्या कोई बता सकता है कि लेफ्टिनेंट बाबा क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो पुराने किस्म का रेडियो बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे मदद बुला सके। कहीं उसका मैसेज कीड़ों तक न पहुंचे, वरना हमारी तो खैर नहीं। ये मार्शन नेशनल गार्ड है, अपनी पहचान बताओ। वाह, इसने तो मदद बुला ली। ये मार्शन नेशनल गार्ड है, अपनी पहचान बताओ। जॉर्ज, ये मार्शन नेशनल गार्ड है, अपनी पहचान बताओ। शायद मैंने घर जाने का इंतजाम कर लिया है सर। मैं तुम्हारी काबिलियत पहचान नहीं पाया बाबा। क्या ये वाकई तुम हो? क्या बात है, मजा आ गया। तुम यहाँ मार्स के रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? हम कीड़ों का सफाया कर रहे थे जॉर्ज, और तुम? मैं हमारे जवानों को बचाने गया, पर वहाँ कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गए। तुम्हारा मतलब सब मर चुके हैं? कोई रेडियो पर जवाब नहीं दे रहा। मुझे लगता है सब नीचे खानों में छिपे बैठे हैं। हम पर बहुत बड़ा हमला हुआ। मैंने इतने कीड़े जिंदगी में कभी नहीं देखे। हाँ, और फिर भी वो हमसे डरते हैं। जाओ। मैं लैंड नहीं कर सकता। जाओ, शिप पर चढ़ जाओ। पेट्रोल्स का इस्तेमाल करो, जल्दी।
सही है या गलत, यही है आज का सवाल और सबकी अपनी अपनी राय है। मार्स बेशक कीड़ों के कब्जे में है, एक क्यू बॉम्ब से सब ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। ग्रेविटी कम होने की वजह से बच्चे बेवकूफ पैदा हो रहे हैं और हम उन्हें प्यार से मार्शियंस कहते हैं। इस बात में दम तो है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी ग्रह युद्ध वगैरह जैसी गलत चीजों का प्रतीक हो, उसे तो उड़ा ही देना चाहिए। काफी अलग आइडियाज थे, इन्हें काफी जानकारी है। मार्स एक छोटा सा बेकार प्लैनेट है जो सिर्फ अपने लाल रंग के लिए जाना जाता है। इस समस्या को देखने का ये अलग नजरिया है। चलिए पता करते हैं फेडरेशन की सबसे स्मार्ट वुमन का इस पर क्या कहना है। चलते हैं स्पेस कमांड। यूनाइटेड सिटीजन्स फेडरेशन के देवी और सज्जनों, स्काई मार्शल एमी स्नैप। प्यारे निवासियों, हमारे सामने एक मुसीबत है। कीड़ों का मार्स पर हमला हमारे हाथों से बाहर निकलता जा रहा है। राजधानियों से संपर्क नहीं हो रहा, वहाँ काफी अफरा तफरी है। आपने सुना होगा कि फेडरेशन की फ्लीट इस बार उन्हें बचाने नहीं जा सकती, क्योंकि वो खुद अपने घर पर कीड़ों से निपटने में लगे हुए हैं। पर यकीन मानिए, घबराइए मत, हमारे पास हुक्म का इक्का बचा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द क्यू बॉम्ब। इसे मार्स पर इसी दिन के लिए लगाया गया था। नहीं, कीड़ों के हाथों में कॉलोनी खो देने का आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर आपने कभी लड़ाई देखी है तो आपको पता होगा कि इस जंग को जीतने के लिए दूर की सोच रखना जरूरी है। अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मार्स उनके हवाले कर दिया तो वो अगला हमला कहाँ करेंगे? मैंने एक टीम तैयार की है जो जितने लोग हो सके बचा के मार्स से बाहर निकालेगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि कीड़े हमारे अपनों पर हमला करने की सोचें। अब हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हम कीड़ों को ये लड़ाई जीतने नहीं दे सकते हैं। मैं उस कमीने की जान ले लूंगी। जॉनी, जॉनी, उठो जॉनी। रिको, उठ जाओ जॉनी। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? चलो उठ भी जाओ जॉनी। अच्छा, ठीक है। क्या सच में? ओह जॉनी, अब ठीक लग रहा है? क्या मैं मर गया? ये क्या? क्या तुम डिस? मुझे पता था ये काम आएगा। तुम तो विस्की आउटपोस्ट पर मर गई थी। मतलब मैं भी मर गया हूं, है ना? नहीं इडियट, पर तुम्हें सोता हुआ देख के यही लगता है। मैं कहाँ हूं? अरे नहीं,
मैं मार्स पर हूं। हाँ, मार्स को तुम्हारी जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम काम पर लगो। हाँ, वो कीड़े। एग्जैक्टली, वो कीड़े। कितने अक्लमंद हो तुम। मेरे ट्रूपर्स का क्या हुआ? लॉस्ट पेट्रोल का है। पानी, मुझे पानी चाहिए। वेल, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बहुत प्यास लगी है। पानी पी रहा हूं पर प्यास नहीं मिट रही। थोड़ा और पियो। तो क्या तुम भूत हो? नहीं। तो क्या मैं जिंदा हूं? क्या मुर्दे चल सकते हैं? नहीं। तो फिर चलते रहो। उठ जाओ रिको। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उठ रहा हूं। क्या तुम मरने वाले हो? क्या? मैंने कहा क्या तुम मेरे सामने मरने वाले हो? नहीं। क्या नहीं? नहीं सर। तो फिर उठो और आगे बढ़ो। जी सर। कुछ समझ नहीं आ रहा। फेडरेशन कहाँ है? मुझे मत पूछो। मार्स नेट बैंड है, सब कुछ बंद है। अरे नहीं। कौन सा पायलट बिना फ्यूल भरवाए टेक ऑफ करता है? हाँ, मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं थोड़ा डरा हुआ था। अगर फ्लीट आए ही नहीं तो? वो जरूर आएंगे। उन्हें हमारे लिए आना ही होगा। क्या वो हम सबको यूं ही छोड़ देंगे? और मार्स को भी? हम खुद मार्स को छोड़कर जाने वाले थे। तुम्हें लगता है फेडरेशन को यहाँ कुछ मार्शियंस की फिक्र होगी? कम से कम फिक्र करने का नाटक तो कर सकते हैं। हम अब तक फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ये तुम क्या कर रहे हो बाबा? मैं अपनी लड़ाई की वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कनेक्ट ही नहीं हो रहा। कीड़ों की प्लाज्मा से सारी कॉम लाइन्स जल चुकी होंगी। तुम्हें यकीन है मैं जिंदा हूं? ये सवाल पूछना बंद करोगी प्लीज? दरअसल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अब भी जिंदा हूं। यकीन नहीं हो रहा? बहुत सी चीजों पर यकीन करना मुश्किल होता है जॉनी बॉय। तुम सही सलामत हो और फेडरेशन अपनी ही एक कॉलोनी को क्यू बॉम्ब से उड़ाने वाली है। क्यू बॉम्ब? तुम चाहती हो कि मैं उसे रोकूं? हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। मेरी खातिर कर दो जॉनी, प्लीज। ठीक है। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुड। लेकिन मैं जानता नहीं कि वो कहाँ है। ओह, वो मैं जानती हूँ। एक पुराने टेराफॉर्मिक टावर के नीचे है। हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। जी सर। तुम्हें हाई स्कूल याद है?
मुझे फुटबॉल याद है और एनलिस्टमेंट भी, बस उतना ही। और हाँ, वो सैंडर बड़ा कमीना था। तुम्हारे दोस्तों का क्या जॉनी? दोस्त पता नहीं, थोड़े बहुत थे, पता नहीं अब वो कहाँ चले गए। अच्छा, और काल का क्या? कॉलेज के वक्त तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? हाँ थे तो, पर उस बात को बहुत वक्त हो गया। काल अब बदल गया है, वो एक जनरल बन गया है। इसका मतलब कि मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता। मेरा मतलब उसकी गलती नहीं है, वो तो फेडरेशन को बचाने में लगा हुआ है। हाँ, पर थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद कम ही रखना। कम ऑन जॉनी, हम अब भी दोस्त हैं ना? जॉनी! क्या? किसी के भी दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की तो जान गवा बैठोगे, समझ गए? समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। ये कैसी बेहुदा हरकत थी कार्ल? अच्छी स्पीच थी एमी, तुमने तो सच में सबकी आंखें खोल दी। तो अगर तुम्हें अपने परिवार से प्यार है तो मुझे मार्स की धज्जियां उड़ाने दो। लोगों को हर चीज की सफाई चाहिए होती है कार्ल, और उन्हें वही पसंद आता है जो उन्हें सच लगता है। ये कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है। फेडरेशन का नेतृत्व करना जिम्मेदारी का काम है। नहीं, सारा खेल रेटिंग्स का है कार्ल, जो तुमने खराब कर दी। क्योंकि शायद मैं अपने दुश्मनों को जानता हूँ। जनरल कार्ल जेंकिंस, आपको गिरफ्तार किया जाता है यूनाइटेड सिटीजन फेडरेशन के साथ गद्दारी करने के जुर्म में। आज ठीक 4 बजे फेडरल काउंसिल के सामने तुम्हारी सुनवाई होगी, और अगर तुम्हें दोषी करार दिया गया तो वही तुम्हारा अंत होगा। तो क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो कार्ल? हाँ, मेरी बात मानो एमी, मार्स को मत उड़ाना। वहां के कीड़ों को मारो और फिर मार्स को उनके लोगों को लौटा दो। दिखा दो सबको कि असल में फेडरेशन का उद्देश्य क्या है। बहुत देर हो चुकी है, मार्स तो गया, और कुछ घंटों में तुम भी मर जाओगे। फिर मैं काम पर ध्यान दे सकती हूँ। और अगर कोई कॉलोनी बगावत करने की सोच रही होगी तो मार्स की तबाही देखकर वो दोबारा सोचेगी। इसे कहते हैं तहे दिल से बदला लेना। इन सब के पीछे तुम हो एमी,
लेकिन तुमने सारा इल्जाम मुझ पे थोप दिया। तुमने मेरी नाक तोड़ दी। इसे सबक सिखाओ। अब तुम्हारी बारी है जॉनी। जॉनी, अरे नहीं, डेस, उसकी हवा टाइट कर दी। हाँ ट्रूपर, तुमने कर दिखाया। बैटरी खत्म हो गई, मैं हिल नहीं सकता। तुम्हें इस सूट से बाहर निकाले? आइडिया अच्छा है। दोबारा मिलकर अच्छा लगा जॉनी। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहा है। मुझे याद है हम आखिरी बार टैंको यूरेला में उस रात मिले थे। तुम जैसे मेरे लिए ही बने थे। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था। और वो रात तो मैं नहीं भूल सकता। जॉनी सच में मन करता है जिंदगी वहीं रुक जाती। हो जॉनी, अब मुझे रुला दोगे। तुम जानते हो मुझे इस बात से नफरत है। शुरुआत तुमने की डेस, और मुझे ये भी याद है कि मैंने कुछ गलत फैसले लिए थे। ओ चुप करो। तुमने जो किया सही किया जॉनी, सच में। वो रहा, वो पुराना टेराफॉर्मिंग टावर। हाँ वही है, और फटने के लिए तैयार है। मार्स को कौन खत्म करना चाहता है डेस, और क्यों? अफसोस, वो एक लंबी दुखी दास्तान है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? डेस, तुम हमेशा की तरह कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे जॉनी। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? अरे नहीं, अब क्या हुआ? कर्नल रिको अभी तक जिंदा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ये तो अच्छी बात है। पर इसका मतलब हम अपने एक साथी को छोड़ा है। और उन्होंने तो हमारी जान भी बचाई है। हाँ सही कहा। अब जान बचाने की बारी हमारी है। चलो वापस चलें। तुम्हारा मतलब वापस मार्स पर जाएंगे? हमें कर्नल रिको को बचाना ही होगा। हाँ चलो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, तुम जहाँ जाने की बात कर रहे हो वो सीधा कीड़ों के बीच में जाने का एक तरफा रास्ता है। हम मोबाइल इन्फेंट्री हैं, इस नाम का कर्ज चुकाना पड़ेगा। हाँ, क्यों करना है मत पूछो, पूछो क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, पर वहाँ हर जगह कीड़े हैं। बताओ मैं लैंड कहाँ करूँगा? तुम पायलट हो, किसी खाली जगह पे लैंड करवाओ। तुम्हारे दिमाग के अलावा खाली जगह है कहाँ? बेहुदा कीड़े, एक को मारो तो 10 और आ जाते हैं।
तुमने मरने के लिए अच्छा दिन चुना है। मरने के लिए अच्छा दिन है। ठीक है। संभल कर कर्नल, क्या? मिसाइल आ रही है। कर्नल, क्या आप ठीक हैं? लेफ्टिनेंट बाबा, आपने सही पहचाना। हम जानते थे आपको कुछ नहीं होगा। ये अच्छा नहीं हुआ। अब क्या करें? नहीं, सब कूद जाओ। ये लैंडिंग अच्छी नहीं होने वाली। हे, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? मैं एक बेखौफ मार्शन योद्धा हूँ। तुम्हारे जितना ही अच्छा, या शायद तुमसे भी बेहतर। सबके सब मरेंगे। उस पार मिलेंगे दोस्त। वो काफी मजाकिया था और उसका अलविदा धमाकेदार था। हाँ। कर्नल! हाँ? आपको सही सलामत देखकर अच्छा लगा सर। हाँ, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। सिचुएशन क्या है लेफ्टिनेंट? दरअसल सर, सिचुएशन तो बहुत खराब है। रेस्क्यू टीम की कोई खबर नहीं है और आपको भी हम यहीं छोड़कर जा रहे थे। फेडनेट से कोई कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा और फेडरेशन ने भी हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया है। हम मार्शियंस हैं इस वजह से। मेरी मोबाइल इन्फेंट्री में कोई मार्शियंस नहीं है, सिर्फ ट्रूपर्स हैं जो ऑर्डर्स मानते हैं। आप बस हमें ऑर्डर दीजिए सर। गुड। हमारा अगला मिशन हमें अभी शुरू करना है। हमें उस टेराफॉर्मिंग टावर तक पहुंचना है। प्यारे निवासियों, आज हमारे लिए एक बहुत बुरा दिन है। मार्स पर अब कुछ नहीं बचा है। उसकी जमीन पर कीड़ों ने कब्जा कर लिया है। किसी के बचने की खबर नहीं है, ना मिलिट्री और ना ही कोई निवासी। और अब हम एक नाजुक मोड़ पर हैं। बहुत सोच विचार के बाद मेरे ख्याल से अब सिर्फ एक ही चारा बाकी है। हमें मार्स को तबाह करना होगा। कीड़ों के खिलाफ जंग सिर्फ बातचीत से नहीं जीती जा सकती, ना ही किसी कमेटी से और ना ही किसी पॉलिटिक्स से। वो जीती जा सकती है उन निवासियों की मदद से जो सही चीज करने की हिम्मत रखते हैं। वो मुश्किल फैसले लेने होंगे जिससे हमारी सुरक्षा में कोई कमी ना आए, और तभी हमारी प्रजाति जिंदा रहेगी।
होने को हम माफ करते हैं। हम तुम्हें याद रखेंगे तुम्हारी वीरता और जिंदा रहने की जिद के लिए, और इज्जत करते हैं क्योंकि तुमने कीड़ों को अपनी सरजमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया। मार्स अमर रहे, युद्ध का देवता। मैं तहे दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ, और स्काई मार्शल होने के नाते मैं उम्मीद करती हूँ तुम चैन से सो जाओगे और साथ ही कीड़ों का भी नामो निशान मिटाओगे। दखलंदाजी के लिए माफी चाहती हूँ स्काई मार्शल, पर किसी ने मार्स नेट के साथ गड़बड़ की है। निवासियों को ये पता होना चाहिए कि मार्स पर जंग अभी जारी है। क्या? नहीं। कैप्टन, मेरा संपर्क सीधे फोर्ट कीलो से है। मोबाइल इन्फेंट्री जिंदा है और अभी तक लड़ रही है। पर ये नामुमकिन है। तो खुद देख लीजिए स्काई मार्शल। क्या हम लाइव हैं? हाँ है। कर्नल रिको, हमें कीड़ों से लड़ते हुए यहाँ पर एक क्यू बॉम्ब मिला है। इसे गलती से किसी ने ऑन कर दिया। हम इसे बंद कर देंगे जल्द से जल्द। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ मार्शियन ट्रूपर्स यहाँ पर आ गए बिल्कुल सही वक्त पर। हम यहाँ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और ढेर सारे कीड़ों को मारेंगे, है ना साथियों? बिल्कुल सही कहा। मार्स अब भी लड़ रहा है और जीतकर हम खाएंगे उन कीड़ों की तंदूरी। वो भी चटनी के साथ। नहीं, नहीं। तो आप फिक्र मत कीजिए स्काई मार्शल, हम यहाँ पर हैं। हम डटे रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। कौन? वो देखिए। चलो फिर से शुरू करते हैं। पार्टी बर्बाद करते हैं ट्रूपर्स। ऐसे तो हमें ये कीड़े नोच खाएंगे। जियो, अगर ये चीज तुमने शुरू की तो क्या होगा? आपका मतलब मौसम बदलना है? मेरा मतलब आसमान चीरने से है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कोर को पावर तो मिल रही है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो कर दो, मुझे फुल पावर चाहिए। जाओ इसे ओवरलोड करो। मुझे 10 मिनट दीजिए। हे कमाचो, मदद करोगी? हाँ जरूर। लॉस पेट्रोल, जियो को 10 मिनट चाहिए। तब तक इन्हें रोके रखो। 10 मिनट बाद क्या होगा? यहाँ बारिश होगी क्या? बारिश से कीड़ों को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हैं। वो रिएक्टर को ओवरलोड कर देंगे और वायुमंडल की धज्जियां उड़ जाएगी। तो फिर हमारा क्या होगा? ओ तेरी। सबकी पावर सप्लाई फुल कर दो। समझ गई। देखने में तो आसान ही लग रहा है।
बात है जियो। हाँ, अगर दुनिया तबाह करना अच्छा काम है तो। तुम कभी ना कभी तो मरोगे ना लेफ्टिनेंट। हाँ, पर अभी मेरा मरने का मूड नहीं है। हम मार्स पर ही पले बड़े हैं, लेकिन कभी ऐसा तूफान नहीं देखा। उन्होंने सही कहा, मेरा कैमरा फेडनेट से कनेक्टेड है। उन्होंने सही कहा, मेरा कैमरा फेडनेट से कनेक्टेड है। फेडरेशन को लग रहा था कि मार्स को नहीं बचाया जा सकता, पर इन ट्रूपर्स और उनके लीडर जॉन एडी को सहमत नहीं लग रहे। ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। क्या मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं होता, ये देखो। सामने देखो। हम इधर ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे कर्नल, हमें ब्रिज तोड़ना होगा। नहीं, अभी नहीं, जियो कहेगा तब। खराब मौसम के लिए खेद है। ये वाला आखिरी स्विच था। ये हुई ना बात। लो, हो गया। ये टावर अब एक बड़ा सा बॉम्ब बन गया है। बहुत खूब ट्रूपर्स, लॉस्ट पेट्रोल का हर सदस्य आज एक हीरो है। मैं इन यादों को मरते दम तक नहीं भूलूंगी, यानी अगले 5 मिनट तक। काम हो गया, ब्रिज गिरा दो। जॉब से। लॉस्ट पेट्रोल, कीड़ों को मजा चखाओ। जियो, हम ऊपर आ रहे हैं, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? कहाँ से निकल जाएंगे? मेरे पीछे आओ। जियो, हमारे पास कितना वक्त है? शायद 8 मिनट। शायद? भाई मजाक तो नहीं कर रहा। ये कीड़े हमेशा मुझे क्यों नोच खाते हैं? नहीं, डच कीड़ों को ही कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगता था। ये क्या है? अच्छी खबर नहीं है लेफ्टिनेंट। अब हम क्या करेंगे कर्नल? चलो टावर के अंदर। और अब क्या करेंगे? सबको खत्म करो और क्या। सही कहा, हम मोबाइल इन्फेंट्री हैं, हम हार नहीं मानते। कर्नल, यहाँ पर कीड़े हैं। कीड़े यार, जहाँ जाओ वहाँ आ जाते हैं, कभी ने पीछा ही नहीं छोड़ते। बुला दो सबको। रीलोड। संभलकर। ऊपर आ जाओ। ये जगह फटने वाली है। चलो ट्रूपर्स, हम अब भी यहाँ से निकल सकते हैं। चलो 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 चलो। अब और कितना ऊपर जाएंगे? जहाँ तक कीड़े ना पहुँच पाए। ओ ये क्या, ये तो हर जगह है। यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं, हम बचकर कैसे निकल सकते हैं?
नहीं मानने वाला हो। और तुम क्या अपने आप को हीरो समझते हो? हाँ, क्योंकि एक हीरो हमेशा घर वापस जाता है। क्या बात कही है लेफ्टिनेंट। अगर मैं आज जिंदा बच गया तो इस बात को टैटू करवाऊंगा और शायद तुम्हें अपनी टीम में भी ले लूं। क्या बात है? लगता है तुम सबको इसमें मजा आने लगा है। क्या ये तुम हो कामन? हाँ। कहाँ हो तुम? अभी नीचे आ रही हूँ, पर इस मौसम की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। इस तूफान में स्पेसशिप उड़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कामन, तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं इन्हें रोकता हूँ। उन्हें मार गिराओ। बाहर चलो। कामन, यहाँ पर। हाँ, बस एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या प्रॉब्लम है? लैंड करने की जगह नहीं है और इस तूफान में मैं ज्यादा तेज स्पेसशिप नहीं उड़ा पाऊंगी। तुम ठीक हो? हाँ शायद। कर्नल, क्या हुआ? अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, शायद उससे भी कम। कर्नल, अब तुम्हें क्या हुआ? वहाँ देखिए, टावर की दूसरी तरफ वो कीड़े ऊपर आ रहा है। हाँ, मैंने देख लिया कमाचो। तुमने सुना कामन? वक्त नहीं है। हैच खोलो और हमारे करीब आओ। प्लान क्या है? जितना कहा गया है वो करो। बस एक सीधा सा सवाल था। चलो ट्रूपर्स, कूदो। मैं नहीं कर सकता सर। क्या मतलब नहीं कर सकते? क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? तुम जाओ। लेडीज फर्स्ट। अरे कूदो भी। गधा करीब का। शुक्रिया। अब मेरी बारी। सब ठीक है। लेफ्टिनेंट, अब तुम्हारी बारी है। करो या मरो। मेरा फ्यूल खत्म हो चुका है कर्नल। आप मेरे बिना चले जाएं। आप जाइए कर्नल। ऐसा नहीं होगा लेफ्टिनेंट। तुम घर जा रहे हो और ये मेरा ऑर्डर है। शिप को नीचे लो। समझ गई। पकड़ लिया। चलो इस प्लैनेट से निकलते हैं। कसकर पकड़ो ट्रूपर्स। टावर कभी भी फट सकता है। This movie is encoded by Toon World for all.me. Oh, hey guys. कार्ल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये कुर्सी तो स्काई मार्शल के लिए है ना?
वो दरअसल कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए उसका काम संभाल रहा हूँ। मुझे स्काई मार्शल बनने का कोई शौक नहीं है। तो क्या एमी स्नैप ये सब करके बच जाएगी? इसे पॉलिटिक्स कहते हैं जॉनी बॉय। तुम ये जानते थे ना कि मार्स पर कीड़े थे और फिर भी तुमने ये सब होने दिया। कामिन, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वेरी फनी। लेकिन ये एक ऐसी जंग है जो कभी खत्म नहीं होगी। कीड़े कभी हार नहीं मानेंगे और अगर हमने मान ली तो हम खत्म। कुछ हजारों सालों तक हम इंसान एक दूसरे से बेवजह की चीजों के लिए लड़ते रहे और फिर एक दिन हमने तारों को छूने की सोची। I mean, क्या सोचा था हमने? क्या हश्र होगा इन सब का? वैसे सोचना तुम्हारा काम है का? मैं बस ऑर्डर फॉलो करता हूं। अच्छी बात है। अब जाओ और मार्स को उन कीड़ों से आजाद करो। हो जाएगा ना जनरल रिको? यस सर। क्या हुआ? तुमसे मिलकर हमेशा खुशी होती है कार्ल। हमारे चारों तरफ आग लगी है। ऑफिसर आ रहे हैं। आराम से। तुम सब में एक ऐसी खास बात है जो किसी और में नहीं है। तुम सब वहां से जिंदा वापस आ गए। मुबारक हो ट्रूपर्स, तुमने मुझे चौंका दिया। तुम्हें अपनी इन्फेंट्री में लेना मेरे लिए गर्व की बात है। हम पार्टी करने जा रहे हैं सर, हमारी जीत के नाम। आप आएंगे? शुक्रिया, मुझे नींद की जरूरत है। शायद इसीलिए इन्हें लोग बंदूक कहते हैं। लेफ्टिनेंट, तुमसे कुछ बात कर सकता हूं? हाँ जरूर सर। तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कहूं कि स्काई मार्शल स्नैप ने मार्स पर कीड़े भेजे ताकि उसे मार्स को तबाह करने की वजह मिल जाए? क्या आप सच कह रहे हैं सर? मैं बस इतना कह रहा हूं कि सभी को अपने हक की लड़ाई लड़ने का मौका मिलना चाहिए, और खास करके मार्शियंस को। ये एक मार्शियन दूसरे मार्शियन से कह रहा है। अच्छा काम किया लेफ्टिनेंट, हम उन्हें कल फिर मारेंगे। मैदान में मिलते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। हाँ, हम मैदान में मिलेंगे। ठीक है लेफ्टिनेंट। स्नैप क्या जानती है और उसे वो कब से पता है? एंटी फेडरल एक्टिविस्ट मार्स्को ने एक सवाल पूछा है। फेडरल ओपिनियन पोल के हिसाब से स्काई मार्शल स्नैप की अप्रूवल रेटिंग पर सवाल उठे हैं। कोई उनकी होशियारी पर शक नहीं कर रहा, पर क्या वो नेतृत्व कर सकती हैं? चलिए मार्स्को से ही पूछते हैं। What did Snap know and when did she know it? What did Snap know and when did she know it? ऑफिसर आ रहे हैं। आज हम कीड़ों के एक बेस का पता लगाएंगे और सबको मार देंगे। तो ट्रूपर्स, कीड़ों को मारने के लिए तैयार?